केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रदे देवी सत्तवत्यै नमो नमः। भक्ता विहीना अपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्यै कृपामयित्वं शरणं प्रपन्नं भिन्ने नमस्ते चरणारविन्दं भिन्ने नमस्ते चरणारविन्दं भिन्ने नमस्ते चरणारविन्दं भिन्ने नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं भजामि राधां अरविन्दनेत्रं स्मरामि राधां मधुरस्मितास्यं वदामि राधां करुणावरद्रां ततो मम नास्ति गतिर्न कापि। श्यामसुन्दर शिखण्डशेखर स्मेरहास्रमुरली मनोहर राधिका रसिकमं कृपानिधे सप्रिया चरण किङ्करीं कुरु। संविददशनतिनं विभो प्रार्थये ब्रजबन्धनन्दन अस्तु मोहो न तवाति वल्लभा जन्म जन्मनि मदेश्वरी प्रिया प्राणनाथ विषभानुनन्दिनी श्रीमुखाब्जरसलोलसटापद राधिका पदतलिखितस्थिते तं भजामि रसिकेन्द्रशेखरं वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभत् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफला अधरष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परमतत्त्वं किमपि अहं न जाने। न विजाचे राज्यं न च कनकमाणिक्यं न विवां न जाचं रम्भं सकलजनकम्मं परवधूं मे सदा काले काले प्रमथपतिन गीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। सभी बोलिए जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हा देवी काकुभर गदगदयद्वाचा जाचनी पत्तिभुवि दण्डवदुर्भटार्तिम् अस्य प्रसादमबुधस्य जनस्य कृत्वा गन्धर्विके निजगणे गणनां विधे। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी हाथ उठाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय श्री गुरुदेव की जय, श्री वैष्णव संघ की जय। सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल वामन गोस्वामी महाराज एवं शिक्षा गुरु में सन्यास गुरु नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णववृंद, मातृवृंद, गौरगत सज्जनवृंद, हरि कथा पिपासु शत्रुवृंद एवं इस संस्था के जितने वैष्णव मंडली, ब्राह्मण मंडली, सभियों की मेरा यथायथ सादर अभिनंदन। दो एक शब्द के द्वारा मैं अपने जिहा के जो है विराम देता हूँ। आप लोगों ने अथक परिश्रम करके ये अनुष्ठान के आपने कराया। Whatever you've arranged here, आप लोग के लिए पहले मैं I've arranged it. First of all, I would like to thank के you लिए all. जोर से सबको ताली विशेष करके I would like to thank you all for arranging this program here. राजकोट में जो है Especially in Rajkot, प्रेरणा मुझे मिला मुझे यहाँ पर हरि कथा आदि करने के लिए। I got this opportunity. Ananga Mohan Prabhu और and Yamunadi Devi Dasi, और विशेष करके and also especially Ramesh Pai, युवराज प्रभु, Jivraj Prabhu ji, Harish Pai, और and Rikishan Pai. इन लोगों ने की They have all together put a lot of और effort प्रेरणा से and हम आप लोग के पास आए हैं and have invited me. इसलिए उल्लेख They've invited me here to speak few words. ये गुरु वैष्णव भगवान उनकी भी कृपा So big applause to them. The Guru and Vaishnavas also are merciful upon them. इस राजकोट In, में आने की एक ही हमारी कारण ही है। there's only one reason that I've come to Rajkot for Bhagwan और कोई Bhagavad कारण नहीं। Prachar. There's only one reason to do Bhagavad Prachar. महाप्रभु संग जीवों की उपदेश दिया। Chaitanya Mahaprabhu has given the instruction to the jivas. Chaitanya Mahaprabhu, यह बताया he said पृथ्वी में सर्वत्र in this गांव-गांव में घर-घर में he predicted and he wanted प्रभु that के नाम from कीर्तन, every village, every country, every हरिनाम town, संकीर्तन। that there would be Harinam Sankirtan. क्योंकि Why? संसार में Because लोग people अनेक प्रकार भोग in में this मस्त हैं। material world, they are हैं? so absorbed in the sense भगवान gratification कौन and है? enjoyment. कैसे उसके भजन करना है, They जीवन don't में know क्या who करना is है, वो पता Bhagwan. भी नहीं है लोगों को। They don't know what to do in their इसलिए life. श्रीमद् They don't know what the भागवत में process श्री सुखदेव is for गोस्वामी पाद sadhana. So that's why परीक्षित महाराज की Srila सुनाते हैं। Sukadeva Goswami Pad महाराज is saying to परीक्षित Pariksit Maharaj, hey Pariksit Maharaj, listen. चार युग है, कितने युग है? There are 4 yugs. कौन जानते There हैं? are 4 कितने युग yugas. है भाई? How many yugas चार are युग there? है। There are 4 कौन-कौन है? yugas. What are they? Satya, Satya Yug, Tetra Yug, इसके बाद Dwapar Yug. द्वापर युग After और that Dwapar Yug कली युग। and Kali अभी Yug. कौन सा युग चल रहे हैं? Now what yuga are we in? कली युग। This is Kali Yug. हाँ, अलग-अलग युग में अलग-अलग So in every yug करके ही साधन भी बताए। it has been shown भगवान की how प्राप्ति के लिए to do अलग-अलग sadhan भी in बताए। every yug. इसलिए श्रीमद् Sadhan, how to भागवत do में sadhan in सुखदेव every गोस्वामी yug पाद is different. कहते हैं So Sukadeva Goswami कितने Pad जन is ध्यान saying को Tatya Yug, ध्यान करते थे। people क्या used to करते थे? do meditation, ध्यान, meditation करते थे। dhyan, meditation.
किंतु कलियुग में But ध्यान in Kali संभव Yuga, नहीं है। it's not possible to do meditation. You मन sit चंचल down हो for जाता है। you sit down for a हैं? little आँख while to बंद करें meditate, you तो shut your संसार eyes की सारी and you will चिंताएं see your mind is so restless. जाती हैं। And all the worries that you दिखाई have in पड़ते this रहते material world will come in your और mind. मन इतने चंचल भी The है, mind is so restless. without passport, Without visa, passport, without visa, flight, ticket, without ticket. आप एक सेकंड में सारा In पृथ्वी within आप 1 भ्रमण कर second सकते you हैं। will have traveled the whole world. जाना नहीं पड़ेगा आपको। You don't have to go. मन इतने चंचल हो That's जाता how है, the mind घूमता is. रहता That's how the mind is. So हाँ। restless. It's always wandering है। इसलिए around. कहा जाए कलियुग में ध्यान जो है So in Kali Yuga, बहुत कठिन कहा to है। meditate is very, बिना very किसी difficult. ध्यान- किंतु देखो सत्ययुग में लोग In Satya Yuga, ध्यान करते थे, people used to do dhyan. क्यों सत्ययुग के लोगों की आयु भी दीर्घ Because था। also in कितने था आयु? Satya Yuga, सत्ययुग लोगों की the life of a human lakh. was 1 lakh. हैं। So the life, 1,00,000 the span वर्ष तक lifespan जीवित was रहते थे। 1,000. कितना लाख? कम 1,000. से कम What? Sorry, 1 1 lakh. लाख तक जीवित रहते थे। 100,000 years. हैं? त्रेतायुग जो In थे the मकई, Tetra Yuga, त्रेतायुग में in लोग Tetra Yuga, जगना करते थे, फायर people were doing yagna, sacrifice। fire क्योंकि sacrifice. अलग अलग युग में अलग अलग। So in every yuga, Sadhana. separate yuga, there were different त्रेता sadhana. युग में लोग क्या करते थे? In Tetra Yuga, जगना करते थे। people were कलि युग doing में जगना yagna. करना भी बहुत कठिन In हो Kali जाता है। Yuga, it's very difficult to do yagna. एक तो One- परफेक्ट ब्राह्मण मिलना बहुत One कठिन हो also is जाता है। very difficult to है, get perfect बहुत Brahmin. कठिन है। There और are लोगों के some पास समय भी perfect नहीं है। Brahmin, but it's very difficult to हाँ। get perfect man. And secondly, समय people कम don't है। have that much time. 2 घंटा 3 घंटा बैठना बहुत कठिन हो 2 or जाता 3 hours है। to sit in अनेक one place प्रकार for के people व्याधि is है। very difficult. रोग बीमारी पड़ा There हुआ is है। so much disease, there is so much हैं? बैठ worries, नहीं पाते। so they cannot sit for जगना so करने long. के लिए आपको And in नीचे yagna, भूमि पर आसन में बैठना you have पड़ेगा। to sit on the floor, on the जगना करना। asan. हैं? कलियुग में कहाँ कर पाते? In Kali Yuga, how is that possible? और अनेक प्रकार सामग्री भी Also, the ingredients you मिलना need बहुत कठिन भी for है। the yagna is कहाँ very मिलेगा? difficult to get all the ingredients. इसलिए कलियुग में कार्य क्या? That's why in Kali Yuga, ये जगना भी संभव नहीं है। it's not possible to do त्रेतायुग yagna. जगते दापरे परिचर्यायाम, दापर युग में In Dwapar Yuga, अर्चन करते थे लोग। Archan, worshipping the deities. कलियुग में अर्चन भी In Kali बहुत Yuga, कठिन। Archan is also very difficult. एक सामग्री मिले अर्चन के लिए, दूसरे And you सामग्री might find one ingredient मिलता। to do the Archan worship of the deities इसलिए कहते and may हैं not be able to find other कलियुग ingredients. में So बहुत सारा therefore, पंथा दे दिया। in Kali क्या? Yuga, it's given नाम us a very संकीर्तन। simple करो, process. ये सब संकीर्तनम। Nam Sankirtanam. नाम Keshavas संकीर्तन करने से Nam ही Sankirtan. सत्ययुग के ध्यान के फल, By doing just Dapar Nam Yugi, Sankirtan in Kali Yuga, you Jagna get the ke phal, same fruit that you और would get in meditation in त्रेता Satya युग Yuga जगने के फल, and दापर युग की the Tetra Archan Yuga ki of phal, fire अपने sacrifice आप and प्राप्त हो Dwapar Yuga of Archan. इसलिए कहता है कलियुग So में क्या just करना चाहिए? by Kali नाम in Kali Yuga संकीर्तन। Nam हरेर Sankirtan. नाम Mer- हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। बृहत नारदीय पुराण में In Brihad Narada Saint Purana, Vyasdev ji ने Vyasdev ji, कलियुग के लिए he's इतने written, सहज सरल उपाय he's दिए। given us such हरेर a नाम, easy process in Kali हरेर Yuga. नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलियुग में और कुछ In करना ही Kali, नहीं। you don't need to do anything else. हरि नाम, Bas, हरे just do कृष्ण, Hari Nam. Hare कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। देखो इसलिए कलियुग में सहज So सरल that's why in Kali Yuga, they have given us such an easy process.
We don't have to do घर में anything. रहिए You stay in your और house नाम करते रहिए। and keep on chanting. Do the Harinam in your own house. अहोवत सपचद गरियान जद जिहाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। श्रीमद् भागवत In में Srimad Bhagavatam, श्री सुखदेव Srila Sukadeva Goswami Pad is saying, हे महाराज, Hey Maharaj Pariksit, अहोवत सपचद गरियान चंडाल जो Chandal, कुत्ते के मांस even the खाते who is eating dog हैं, कहा जाता है meat सपच कहा जाता है। is अहोवत सपचद गरियान So it's called जद sapacha. जिहाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। जो एक एक बार, बार उनके even नाम if ले लेते once हैं, बस a dog eater, उस स्वामवेदी Chandal नाम से सृष्टि will बन speak जाता है। Bhagwan's name once, भागवत में is वर्णन है, above, will be कहते हैं, above the अहोवत Samvat सपचद Brahmin. गरियान जद जिहाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। और ये नाम करने से ही But by chanting वेद पाठ हो Nam, जाता है। you are actually doing the नाम करने से ही समस्त Veda तीर्थ में part. Just doing by स्नान हो Nam, जाता है। you are having कहीं जाना नहीं Snan पड़ेगा। in all the Tirth Dhams, in the holy Gam, you are bathing in the Tirth Dhams. People go to Gangotri, Kedarnath, और अनेकों स्थान पर Haridwar, they go to all different places. शास्त्र में कहते But हैं, in Shastra, भागवत में वर्णन it करें, says, in Shastra, in Bhagavad, it says that, प्रभु के नाम but just लेने by से सब Prabhu's स्नान, name, तीर्थ स्नान हो जाता you है। are having Snan of all the Tirths. वेद पाठ अध्ययन In the हो जाता है, Ved जितने Pata, भी all शुभ- just जितने by भी doing the शुभ कर्म Nam, हैं, all the Ved समस्त paths प्रकार के are शुभ also, कर्म की फल all the fruit of the Sukh Dharma is done just by doing Harinam. प्रभु की नाम की महिमा दिखाई। That is the glorification of Bhagwan's name. कलियुग में केवल In Kali Yuga, नाम only आधार, there is सुमेरु only सुमेरु नर उतना ही पारा। तुलसीदास जी Tulsidas रामचरित is मानस saying in में Rama's वर्णन Charitra, करें। he's saying कलियुग में in केवल Kali Yuga नाम only केवल Harinam. एकमात्र नाम के आश्रय Bas, में you have to take और the कुछ shelter of Harinam. You don't have to do anything else. है? इसलिए नाम की महिमा दिखाई That's why this is हम this shows the कैसे glorification of नाम Nam. करें? विश्वास करके हरि नाम How को should we do Harinam? ये With नाम faith. करने से With सब कुछ हो faith. जाता है। Everything will happen just by इसे श्रीमद् भागवत chanting में Harinam with faith. सुखदेव So गोस्वामी that's why पाद in Srimad Bhagavatam, Sukadeva परीक्षित Goswami महाराज को जो है is telling अजामिल के to पखान सुनाए। is telling किसको पखान? Pariksit Maharaj, अजामिल। he's reciting, है? he's narrating Ajamil's katha प्राचीन भारतवर्ष में in Prachit, South India. अजामिल In नाम से Prachin, एक there was विद्वान, one वेदज्ञ person, ब्राह्मण थे। there was one Brahmin whose name was Ajamil. सब प्रकार के कार्य करते थे। He was doing many things. ब्राह्मण के जो चार Like छह प्रकार के Brahmin, कार्य होते हैं। whatever, the Brahman's जगन, duty, जायन, as he अध्ययन, was अध्यापन और doing दान, also. प्रदीप्त। संग जगना आदि करते So he was doing yagna. और दूसरे की भी सिखाते। He was also teaching संग others. वेद पाठ करते हैं। He और was doing दूसरे की some वेद Ved. पाठ Correct. कराते। He was also doing some Veda part, and he और was also teaching दान others ग्रहण to do भी some करते Veda. हैं और दूसरे की दान He भी was देते हैं। also donating, and he was जगन, also जगन, receiving अध्ययन, donation from others. दान प्रतिग्रह। अजामिल नित्य Ajamil जंगल से सूखी लकड़ी को चुन करके he लेकर के went आते in the थे। jungle to pick up the और sticks, उसके द्वारा but the wooden sticks, घी के द्वारा हवन करते थे। and with that, with the ghee, he used to do havan, and he used to do havan with Gayatri mantra. एक दिन जंगल में One day he went in the jungle लकड़ी को जो है to collect संग्रह some करने के लिए, wood, सूखी लकड़ी को dry wood. संग्रह करने के He लिए was collecting some dry wood. कोई शुद्राणी के जो है He saw दुर्व्यवहार को देख लिया। one देखो woman, उनके चित्त and man मलिन हो गए, and his mind घर में आ गए। got disturbed, हवन and तो his किया, heart got impure. किंतु इस शुद्राणी So के when he तरफ came home, and he was doing the yagna, but his mind was absorbed in that lady that he saw with another man in the forest. सती साध्वी So he पत्नी, left his also mother and father, wife and children. He left that family
He started to do all the bad things like drinking, stealing. So whatever the sinful activities are, he was doing all these activities. So if one follows, if one person goes beyond outside his dharma, outside his responsibilities and duties, then his life gets spoiled. So listen carefully. Jivan, our life is like that. If once you leave the true path and go into the wrong path, and to come back into the true path is very difficult. In English it's called addiction. So that person becomes addiction. When somebody is addicted to, what would they do? For example, like somebody is drinking alcohol, and then it's very difficult to give up alcohol because he's addicted to alcohol. So if somebody gets trapped in the bad activities, then it's very difficult for him to come back into the right path. So this was the situation of Ajamil. How Ajamil was such a great Brahmin who was serving the parents, and look at his situation now in jungle. So he started to live with a Sudrani, and he was started to do all these bad activities. And then, so the Sudrani had 10 children from him. Old age came. Then, and the last child's name, they named the last child's name Narayan. Today, people, there's a fashion. There's a fashion nowadays. They don't give their children Bhagavad Naam, they give children's name as Daku, Chaku, Baku, Pintu, Sintu, Ditu, Situ, Titu. Before children's name were given like Ram, Govinda, Radha, Lalita, Vishaka. Nowadays, in households, these names, they don't give Bhagwan's name. This is Kalika. People's situations are also changing. Now when they wear clothes, they torn clothes, and they think that's fashion. Once I went in England. Once I went to England, one person came, pants, jeans, the pants, jeans. The jeans, she was wearing the jeans. There were 4 holes in the jeans. I thought maybe he's very poor. I asked somebody, everybody's here, everybody's wearing nice clothes, but why there are so many holes in her jeans? Then he said, Maharaj, I will let you know afterwards. Then afterwards, he said, Maharaj, this is fashion. So you have to pay more money for a pants that has holes. So that's also happening in India. I'm saying this why? Because we can see where this Indian culture is going towards now. The Sanskrit culture of India, we are forgetting that. We want to be like other Western countries. And the Western countries, foreigners,
They have got tilak on their forehead. They wear nice, their clothes, they are wearing dhoti. Prabhuji, our Prabhuji lives in Brighton in England. See, he's wearing dhoti. Isn't it? Stand up. Yes, he's wearing dhoti. Isn't he? Yes. आपका ही तो घर कहीं है, देखो ये फ्रांस के है हमारी यमुना दीदी। See our Yamuna Didi, she's from France. साड़ी पहनी है, She's wore such a beautiful sari. Stand up. अभी अंग्रेजी में बोला कि नहीं बोला? And see, she spoke very nicely in English. संस्कृति है। Because why? This is our culture of India. संस्कृति के हम भूल जाते हैं। We forget our culture, we forget our Sanskriti. संस्कृति क्यों हम लेना चाहते हैं? और पाश्चात्य देशों के लोग And we have forgotten our culture. And look at other countries. Look at other countries. They are honoring our culture and they are practicing. Look at Indira Devi. She's from UK. देखो साड़ी पहनी है कि नहीं? देखो Do this. How do you do this? Look at her. Look how beautiful sari she's got on. Can you do this? Face हम off. इसलिए कह रहे हैं I am saying this हमारे अपने सभ्यता संस्कृति को हम that भूल जाते why हैं we are forgetting our own culture और पाश्चात्य देश के सभ्यता and we are संस्कृति को accepting अपना other बहुमान countries' करते हैं। culture and we are आज हमारी शिक्षा भी उसी प्रकार, हम जब तक इंग्लिश नहीं बोले now तो it's समाज also में हमें Siksha. किसी If you don't speak हमें आदर English, नहीं करेंगे। then दो people चार in इंग्लिश India will बोल not दिया जाए, honor. तो हाँ, Here, ये if you speak विद्वान। little English, then people will think in और India अपनी that, मातृभाषा को he's a हम very भूल great scholar. So if we अपनी forget our मातृभाषा mother को tongue, if you speak your mother tongue, बात ही सही है। then nobody आज will हमारे honor आप so लोग much. सोचते हैं, हमारे बच्चा क्या पढ़े? What इंग्लिश मीडियम में everyone is saying, every parents want their children. और What type of पाश्चात्य want their देश में children? जाए English medium. और And that, धन अच्छी तरह से and कमाए। किंतु गए they बच्चे want तो देश में their वापस children नहीं to आए go तो। to overseas and earn more money. मैंने बताया ना भारतवर्ष Once your ऐसी children भूमि go है। to overseas, they will not come back to India. ऋषि भूमि कहा जाता India है, is जन्म a भूमि कहा India is a holy place. It's called Rishi's place. अनेक जन्म की सुकृति के फलस्वरूप All पुण्य के all the फलस्वरूप punyas, भारतवर्ष में all the जन्म हुआ। sukriti and the punyas we've got birth here in किंतु हम India, पाश्चात्य देशों में in Bharat. चले जाते हैं। But we want to go Worldwide overseas बढ़ना to जाते other हैं, बस। countries and stay there. एक पीढ़ी तो गए, दूसरी पीढ़ी, Then तीसरी one पीढ़ी, generation has gone बस there. वही रह जाए। Then second generation will stay there. हमारी सभ्यता संस्कृति के भूल जाएंगे। And they will हम forget कृष्ण our गोविंद राम नाम culture. ग्रहण नहीं करते। We are not chanting आज Govinda हमारे देश Krishna's की name. स्थिति पे जा रहे हैं। That is our situation. Ram, That's the Krishna, situation Govinda. here. Ram and ये Govinda's नाम name. लेना भूल गए हम। We've forgotten to chant देखो, Ram and Govind's name. आज Today, सभ्यता संस्कृति कहाँ कैसे चल रहा है, you can see what's happening to our ये देख करके Sanskriti, बहुत दुख आ जाता our है। heritage, our culture. And it's very धीरे sad धीरे to see that. हम अपने सभ्यता संस्कृति And slowly we will forget our Sanskriti कल्चर को हम and भूलते our जा रहे culture we are forgetting. हैं। राम कृष्ण की जो Ram आदर्श and Krishna's वो हम भूलते we are forgetting. माता Ram पिता के said, सम्मान करना to हम honor, भूलते to जा रहे हैं। respect our mother and father, we are forgetting. That पिताजी के also. आजकल लोग क्या बोलते हैं? Now what are they saying to Pitaji Pitaji? नहीं बोलते, dad बोलते हैं। They क्या call बोलते their हैं? Pitaji what? Dad. Dad. They माँ don't के call क्या their बोलते हैं? father Pitaji. माताजी नहीं What कहते। do they call their माताश्री mother? नहीं कहते। They पिताश्री don't call नहीं कहते। Mata Shri or Pita Shri. They don't Mom. call their mom. Now और what do माँ they को call their और भी mother? शब्द They कहते call हैं, mom or mom. Mom. हाँ? आप लोग जानते हैं ना, You know that. जो पहले जो मृत शरीर को जो है एक प्रकार जो है आयुर्वेदिक तेल आदि के द्वारा रखा जाता था, उसे क्या कहा जाता है? At that time, before they used to have this special Ayurvedic oil, पिताजी के पिताजी नहीं and कहते, they used to dad, call them mommy. dad. So now Pitaji, उसी का father, they अपमान call करते हैं। dad. किंतु हमारे भारत सभ्यता संस्कृति इतनी सुंदर, Our माधुर्य शब्द जो है, Sanskriti and our पिताश्री, culture, of our father and the language is so sweet. We say Mata Shri, mother is called ये Mata भारत से Shri, छोड़ करके कहीं नहीं मिलेगा। father ऐसे is called मधुर जो Pita Shri. स्नेह और प्रीति। Shri. This is the love and affection. You will not see this in any other country. किंतु हाय हमारे भारत But in our Bharat, slowly, we see that in our Bharat,
that Sanskriti and the culture is being destroyed. So now they say Sanskrit is a dead language. They are not even studying Sanskrit. Ramayana, Veda, and our Gita. People don't want to study. Even in college and school, they are not teaching Sanskrit. Very few colleges may be teaching Sanskrit. Why? If you don't study Ram and Gita, then how will we understand? How will we understand our Sanskrit culture? How will we understand Bhagavad? जिसके कहा जाता है ये भागवत के देव भाषा कहा जाता है. Bhagavad is called Dev Bhasha, language of Dev. ये संस्कृत यदि हम अध्ययन नहीं करें, if we don't study Sanskrit, धीरे-धीरे then slowly हम सब अपने भाषा सब भूल जाएंगे. we will forget our language. आइए कथा में अजामिल. Ajamil, come back to the katha. देखो Come back to the अपने katha. अंतिम जो पुत्र जो है, And उसका the क्या नाम रखा? last क्या son's नाम name रखा was Narayan. So नारायण. Ajamil, जोर से बोलो एक बात भगवान the के नाम youngest करो. son's name was क्या नाम रखा Narayan. है? Narayan. नारायण. देखो कितने सुंदर नाम. Such a भगवान के beautiful नाम name. That is Bhagwan's बोले कोई name. माला में जप करे अथवा नहीं करे, So if somebody don't chant on the mala jap, but if they give the name of the son Narayan or Krishna or Govinda or Radha or the girl's name Radha, then eating, standing, going, then you will speak, hey Govinda, come here. So you will speak, hey Govinda, hey Narayan, come here. So like that you will be chanting Bhagwan's name. So Ajamil's youngest son's name was Narayan. If you give your son's name Narayan, and that means you are chanting Narayan. So by just chanting Narayan, even though it's your son's name, your sin is being destroyed. So Ajamil just spoke Narayan, just by him saying Narayan, his paps got destroyed. That is the power of Bhagwan's name. In Shastra, in Sansar, in this material world, we are always doing some sinful activities by eating or walking. By walking, you come here by walking. Yes, you come here by walking. And how many ends you may have killed? We cannot see that. जिसका हम प्राण दे नहीं सकते, उसके मारने के हमारे अधिकार नहीं. We have no right. Who we cannot give life to, we have no right to kill that other life. पाप हो जाता है. That becomes sinful activity. और लोग तो ना जाने कितने कितने पाप भी कर लेते हैं. So many people even kill their mothers, Brahman, killing the Brahmins. They are slaughtering cows, killing cows, killing mothers. That's all sinful activities. So many paps. ऐसे पाप से जीवों की मुक्ति कैसे हो? So how will this be? How person who has done so much, committed so many sins, how that person can be delivered? Therefore, every action is equal and opposite reaction. प्रत्येक वस्तु के क्रिया So every action you do has got an opposite reaction. If you may give suffering to anyone, that somehow or the other, that suffering who you given to others will come to you. So if you, so whatever we do to others, we also have to suffer for it. That is the fruit of the karma. It will come to you. So that's why Bhagwan is saying in Gita, माँ फलेसु कदाचन. कर्म तो करने के तुम्हारे अधिकार है. You have got adhikar to do karma, but the fruit of the karma, I will give the fruit of the karma. जैसे संसार में कर्म आदि करते रहते. So in this life, whatever karmas you do, you have to pay for it. You have to suffer that karma. Like we are doing this cycle of this karma.
So this cycle of karma, बार-बार ही कर्म करते रहेंगे, you keep on doing karma, you will take the life, birth again in the mother's womb, and then again you leave your body, and then again you come back, take birth in another mother's womb, and then die again. This is called the cycle of repeated birth and death. But how can you come out from this cycle of birth and death? So what is it? You only by saying Bhagwan's name. Even once you chant Bhagwan's name. So Ajamil, when he gave the name his child Narayan, his pap got all destroyed, his sins got destroyed. And then again and again he spoke Narayan, Narayan, Narayan. Then he Sukriti, he got Sukriti, that was Namabhas. And the fruit of that was in the Vaikuntha, Vishnu Dutas gave him darshan. इसी कथा को श्री सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज के श्रवण कराया। Sukadeva Goswami Pad narrated this katha to Pariksit Maharaja. 84 years, 84 साल हो गए। 84. मृत्यु की शैया पर वो So this Ajamil was about 84 years, and he was sitting on a bed and he was about to die. He was passing urine and stool on the bed. It was so very smelly. Nobody used to stay near him. That last breath he was taking, he was taking in the last 2 seconds, his breathing was going to stop. And that time Ajamil saw three Yamdutas came. They came. They had huge body. Yamdutas had huge body. So here nowadays people think, who will see? You know, Nasi. They have no. They are atheists. They are atheists now. That when the body gets burned, what happens to the body? Nobody knows. So this is what the atheists are like. But if you don't have money, borrow it from borrow money from others or have loan. Then you don't have to pay back to that person or the bank. Oh, if you don't have money, go and steal from others. Whatever, steal from others. And who will see what will happen with karmas? What will happen after? Who will see that? Oh, Brahman logs have written in the Shastras just to make us, to scare us. That it's written in Ved Puranas. Even if you borrow 1 cent from somebody, you have to pay back to that person. Life after life, you will have to come back in this world. You will have to come back either by a dog or a cow. You will have to pay back them. To pay back that debt, you will have to come back. The atheist people think atheist people, पापियों की बात है। That is papis. किंतु जन्म जन्म इस संसार में आना पड़ेगा। किसी से एक काना कौड़ी लिया और उसे लीज चुकाया तो money or anything from somebody and you didn't pay them back, you will have to come back in this life उसके पाप to pay back. So Ajamil with his pap, so because of his sinful activities, how many Yamdutas came? 3 Yamdutas. They had huge body. Hi, re. क्यों हम जब पाप करते हैं 3 प्रकार से करते हैं। We had why 3? Because we do 3 types of paps. One with body, one with our speech, and the third by with our mind. So that's why 3 Yamdutas जमदूत आ गए और उनके देख करके अजामिल डर गए। So when Ajamil saw them,
He got so scared, he even passed urine and stool. I will tell one thing, very truth. I'm telling the truth. Whatever we are doing in this material world, good or bad, who is seeing that? Chitra. CCTV लगा हुआ है. CCTV, it's like a CCTV. There is CCTV. See, there is here, I don't know, there is here, in big places, they always have CCTV. पीछे पीछे कौन क्या कर रहे हैं? Back there is a CCTV. लिखा हुआ है. बस whatever everyone is doing, it's all written down. आप जो कुछ भी कर रहे हैं, so whatever you do, good or bad, वो सब लिखते जा रहे हैं. everything's kind of recorded. सब टीवी आपके मृत्यु के पश्चात, and then after your death, when the yam roads, then when they take you to the yam lok, then you know who is writing all this? Is Yam Maharaj's clerk, and the name is Chitragupta. क्या नाम बताया? Chitragupta. He is writing everything. And when they take you to Yam Lok, they will show your life, what you've done. Chitra means will take the photograph. Gupta means hidden. In a hidden way they will take the photo. So nowadays we can call that as CCTV. So everything is recorded. Whatever you are doing is all recorded. So Yam Maharaj will. What have you done? We will. You'll get punished. Sinners will get punishment. ये नहीं है जे मैंने पाप किया कौन देखता रहा है. It's not like oh yeah, I've done pap, who saw me. दूसरे के वस्तु पड़ा हुआ है, बस उठा लिया. If somebody's others belongings there and you pick that belongings to and steal it, then Chitragupta is showing everything. They're making a record of it that you steal, you stole this, you did this, yes, everything. They'll show you the picture. That's why, so that's why 3 Yamdutas came to collect Ajamil and take Ajamil to Yamlok. So there were 3 Yamdutas came to collect Ajamil to take him to Yamduta because he did sinful activities. So Ajamil started to get all frightened. And at that time he saw, and just far away from him, he saw his small young boy, and his name was Narayan. His name was called Narayan. At least chant Prabhu's name once, Narayan. And Ajamil very loudly he said Narayan, Narayan. And he spoke his son's name Narayan. Ajamil thought, who will protect me? Maybe my son will protect me. So that's why. What happened? Where did the sound of Narayan go? It went. It's a Sabda Brahman. Where did it go? It went to Vaikuntha. And then in Vaikuntha, Bhagwan Vishnu started to tremble. Then Swayam Vishnu sent his 4 Vishnu Dutas. How many Dutas? Vishnu Dutas? 4. 4 messengers of Vishnu Dutas came. They looked like Vishnu. They looked very beautiful like Vishnu. Sank, Chakra, Gada and Kamal. They were holding that. The 4 Vishnu Dutas came. And then stopped. They stopped. They stopped these Jamadutas. Don't you know where you are? Why you coming here? The Jamduts say, hey, Ajamil is a great sinner. So we have come to collect him. We have come to take him to Yamadut. This is the law. So this is the law. If somebody is doing bad sinful activities, then we have to take him to Yamdut. In his life he's done many pap. Then but Vishnu Dutta said no. But at the last, in his last breath,
He chanted Bhagwan's name Narayan. तुलसीदास जी भी लिखते हैं, Even Tulsidas is saying in Ramcharit. क्या लिखा? जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत काल राम नाम अबत ना आई। कितने बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग, So the great rishis, नाम जप करते they हैं, are chanting Bhagwan's name. अंतिम समय But at the last प्रभु के breath, नाम आना बहुत कठिन है। it's very difficult to तुलसीदास जी लिख रहे हैं, chant Bhagwan's जन्म जन्म name मुनि at your last जतन breath when you कराई, are about to leave अंतकाल your राम body. नाम अबत ना आए। So किंतु Tulsidas अजामिल is saying अपने बेटा के it's नाम very लेकर के difficult to पुकारा। chant Bhagwan's name on your last breath. इसे विष्णु But दूतों what ने is कहा, Ajamil is doing? Ajamil is देखो ये chanting प्रभु के नाम Narayan. ले ले। So Vishnu Dutta जब said, लोक look, में he is जब speaking लोक में Prabhu's name. नहीं He is जाए। saying Lord's name. एक श्लोक So मैंने he बता will दिया। not go to Yamaduta. संकीर्तनं पारिहास्यं स्तोवं हेलनं एव वा वैकुंठ नाम ग्रहणं अशेषाघरं विदुरति। प्रभु के नाम किसी प्रकार से एक बार ले ले बात। How in any situation you chant Prabhu's name? अजामिल प्रभु के नाम नहीं लिया, अपने बेटा Actually, के नाम लेकर Ajamil के पुकारा, इससे didn't संकेत हो wasn't गया, chanting हिंस। Prabhu's name. He was chanting his son's name. संकीर्तन परिहास, कोई हास परिहास करते एक बार प्रभु के नाम ले ले। Even knowingly and unknowingly, if somebody भले क्या chants कष्ट Bhagwan's कष्ट नाम name, करके क्या होगा? बस देखो, then हास can you परिहास से भी see, नाम भी ले ले। even if knowingly you are chanting Bhagwan's name, उसे how नाम much में ही benefit you महिमा would दिखाई। get? So this संकीर्तन is the परिहास glorification of तो Bhagwan's name. स्तुति आदि करते हैं। कभी बजा बजाते हैं, हारमोनियम बजाते Like हैं। sometimes they are playing सारे गामा पादा harmonium. निसा गामा रेसा धापन When सा सा somebody सा सा playing फिर कहते हैं, harmonium, हरे सारे राम हरे हरे राम 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 हरे हरे Instead of कृष्ण Hare Krishna. कीबोर्ड में लगा हाँ, हाँ. पर So किसी we have प्रकार से एक keyboard. बार प्रभु के नाम So हो it जाए doesn't बस। matter in any way, however, whichever way सारे you पाप chant नष्ट हो Bhagwan's name, हेला your sins हेला are में इच्छा destroyed. नहीं है। Hela means ichha, without even कमर में- desire. कमर में दर्द होता है, Like you have बैठने के समय आप कैसे बैठते हैं? pain, राम, राम। you have got pain in your back, and then कमर when में दर्द हो गया, and you got pain in your bed and you want to stand राम up, राम करके बैठ। then you say, बस ऐसे oh, कोई sit down, then you say घटना घटी। Ram, Ram, Nam. आपके मुंह से अकस्मात क्या नाम निकलते हैं? अरे राम राम। Ram, Hare Ram. So if हैं? something happens, देखो। then you say, hey, ऐसे Ram, कोई Ram, दुर्गंध भी Ram. आ रही है। So even if something हैं? very smelly, you know, you are passing ये by, तो राम oh, राम। such bad देखो, smell is प्रभु come, के then नाम what will you की say? उच्चारण हो Oh, Ram, Ram. उसमें भी पाप नष्ट हो जाता है। Then also by saying that लेकिन your pap is संकीर्तन destroyed. पारिहास्यं स्तोवं हेलनं एव वा वैकुंठ नाम ग्रहणं अशेषाघरं विदुरति। अशेष अघ माने समस्त पाप नष्ट हो Means जाता है। all the pap are destroyed. एक बार कोई प्रभु के Even नाम once you speak Prabhu's name. हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। अजामिल देख Ajamil so आश्चर्य की बात, he सोचने लगे मैंने पापी महापापी था, started to realize that, केवल oh, I am मैं a ma अपने बेटा papi. के नाम लेकर के पुकारा। Just because my son's Narayan. name was Narayan and I spoke my और son's देखो name भगवान Narayan, विष्णु and look, मुझे even रक्षा करने के लिए Lord Vishnu came to protect अपने me. चार To protect me, he विष्णु दूत sent को मुझे 4 भेज दिया। Vishnu Dutas. कितने दूत? How many चार Dutas? विष्णु दूत। 4 नाम ही Vishnu तो था, Dutas. नारायण। Why चार 4? अक्षर का Why नाम। 4? Because it's 4 letters. Narayana. प्रभु That नाम means की 4 महिमा। letters इतने of सुंदर। Narayan. So that's why 4 है। Vishnu Dutas came. ये जमदूत The Jamdut, लौट करके गए they went भगवान back. The Jamdut जम महाराज के पास went back to और Yamraj बोलने Maharaj. लगे, Yam Maharaj. शंख चक्र गदा पद्मधारी I said, ऐसे hey, महापुरुष का हमने दर्शन किया। We had darshan of Vishnu देखो Dutas. जम महाराज कहने लगे, Yam Maharaj हे said, दूतों hey Dutas, आप लोग बहुत भाग्यवान हो। you are very fortunate. है आप लोग जिसके दर्शन किया You had darshan of प्रभु Vishnu के Dutas. अनुचर है। They are the messengers, Huh? they are the servants of तुम my लोग Prabhu. महाभाग्यवान। So you are very, संत very जम महाराज fortunate. कहने So लगे, Yam Maharaj said, सुनो, listen, आज से कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है मैं today बताता now हूँ। I'll tell you where you should go and where you shouldn't go.
संजम महाराज कहने लगे, Yam Maharaj said, ये देखो, look, जिहान भक्ति भगवत नाम गुणध्रियम चेतस्न स्मरति तच्चरणारविंदम ताने अनुद्ध असुतो अकृत विष्णु कृत्वा। संजम महाराज the कहने Yam लगे, Maharaj said, जो एक बार जी हमें if भगवत नाम नहीं somebody करते, उनके पास जाना, who don't chant Bhagwan's जो name, एक even बार once, प्रभु के नाम ले then go लेते to हैं, them. But उनके who, पास भूल से भी दूर से who जाना, even speaks मत जाना। Bhagwan's name, even once, do एक not बार go जिसके there. ललाट पर तिलक देखोगे, And in his क्या देखोगे? forehead, if you see इसको तिलक whoever's बोलते हैं got a ना? tilak on their forehead, उनके पास मत जाना। also don't go to them. हैं? ये लोग जिहान भक्ति भगवत नाम गुणध्यम चेतस स्मृति, जो एक बार Even मन once, के द्वारा ही प्रभु के even स्मरण in कर लेते हैं। mind, they गीता में भगवान भी कहते हैं, remember Bhagwan. मद भक्त In मत जाति Gita, मान Bhagwan नमस्कुरु। is saying in मेरे भक्त Gita, बनो। you become my कहते हैं आपके devotee. भक्त बनना तो बहुत कठिन है। It's very difficult to मत become your जाति मेरा devotee. पूजा करो। Then बोले, पूजा Bhagwan is करना saying, भी कठिन oh, है। we do जो worship भगवान me. कहते हैं, Then और they're सरल saying, बता okay, देता हूँ। worship is also very मान difficult. नमस्कुरु। Then Bhagwan is saying, एक बार okay, हाथ even जोड़ करके once you fold उनके your प्रणाम hands कर लो बस। and do pranam to भगवान गीता में इतने Prabhuji. सरल उपाय दे दिए। So क्या Bhagwan करेंगे आप in बताओ? Gita, Krishna has हैं? given us प्रातः such a काल में उठ simple करके method. हाथ जोड़ Simple करके way. प्रभु के स्मरण करो। In the morning when you हैं? get up, fold आप your उनके नाम hands ले लो। and remember Bhagwan. गोविंद बल हरि गोपाल बोलो। And chant Govind's गोविंद name. बल हरि गोपाल बोलो। गोविंद बल हरि गोपाल मेरो राधा रमन गिरिधारी गिरिधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमन गिरिधारी गिरिधारी श्याम बनवारी बोलो राधे 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 जय जय श्री राधे 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 जय जय श्री राधे बोलो राधे 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 जय 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 श्री राधे 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 जय 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 श्री राधे बोलो करुणामयी राधे 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 करुणामयी राधे 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 जय 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 श्री राधे 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 जय 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 श्री राधे। देखो एक बात बताता हूँ, विष्णु सहस्त्र नाम Vishnu, पाठ करने पर जो फल होता है, all the Vishnu says a part. So then, the fruit you get by doing Vishnu part, by just doing one Ram, one name of Ram, one Vishnu's name, you और get. 100 बार कृष्ण नाम करने जो फल प्राप्त So होता है, 100 names, एक 100 बार times you get Krishna's name. राधा जी के नाम करने। So you doing one name of Radha. So whose name we should say is Radha's name. शास्त्र में प्रमाण दे रहे, देखो In Shastra is- रामेति in Shastra there is evidence. रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम वितुल्लानां One name. राम नाम वरानने सहस्र नाम 1000 त्रिवत्तातु जप 1000 Vishnu name is equal to one Ram Nam, and 3 Ram Nam is equal to 1 Krishna Nam, and 100 Krishna's Nam is equal to 1 Radha एक Nam. बार की कथा है कैलाश में, Once there was a katha in देवी Kailash. पार्वती Devi Parvati, शिव जी के भोजन करने में थोड़ा देर हो गई। she got a bit delayed in preparing the bhojan for Shivji. देवी पार्वती So Shivji said, आज hey Devi भोजन देने में Pratan, तुम्हारा देर क्यों हुआ? why are you so late in देवी पार्वती serving बोली, me the food "ना, today, prasad today? मैं एक व्रत ले लिया। क्या So ले लिया? Devi व्रत ले said, I've बोले, taken क्या? one मैं vow हर रोज that I will every विष्णु day, सहस्त्र नाम जप करता that हूँ। I will कितना नाम? chant, 1000 I will chant विष्णु 1000, सहस्त्र नाम I will जप chant करता हूँ। Vishnu's name इस 1000 जप करने times. में थोड़ा देर So हो। that's why I got a देखो, little शिव bit जी कह रहे हैं, delayed देवी पार्वती in preparing the मैं तुमको सुना रहा हूँ। prasadam. So you can listen, Devi Parvati, I'll देखो 1000 विष्णु नाम जप करने So में by जो फल chanting होता है, 1000 Vishnu एक बार names,
you get fruit, the same fruit by just chanting one Ram's name. So 1000 Vishnu Nam equals to one Ram Nam. ये राम और रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सब सहस्र नाम नामवि तुल्यं राम नाम वरानने. हे देवी, saying, hey Devi, एक बार कोई राम नाम जप कर लेते हैं, once if somebody नाम की बराबर one name of Ram is equal to 1000. It's the same fruit you get by chanting 1000 names of Vishnu. और कुछ सरल बताइए. So Parvati is saying, oh, what's easier than that? सहस्रनामं तुम पुण्यानं त्रिवृत्तातु जत्फलम् एको वृत्तातु कृष्णस्य नामैक जत् प्रयच्छति. So 3 times of the fruit you get by chanting 3 times Ram's name is same as one Krishna's name. So by chanting Krishna's name once you get the same fruit of chanting Ram's name 3 times. और 100 बार chanting Krishna's name, the fruit you get for chanting 100 times Krishna's name is one name of Radha. So whose name you should chant? Radhe 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 Jai Jai Shri Radhe 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 Jai Jai Shri Radhe. Bolo Radhe 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 Jai Jai Shri Radhe 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 Jai Jai Shri Radhe. Bolo Hamara Dhanna Radhe 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 Hamara Dhanna Radhe 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 Prema Dhanna Radhe 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 Prema Dhanna Radhe 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 Radhe. Bolo Radhe 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 Jai Jai Shri Radhe 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 Jai Jai Shri Radhe. Sami taali bajai. Bolo Radhe 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 Jai Jai Shri Radhe 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 Jai Jai Shri Radhe. Bolo Radhe 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 Jai Jai Shri Radhe 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 Jai Jai Shri Radhe. एक बात सच बताता हूँ, हमने अभी कहा प्रभु के नाम लेकर के I say, you know, when you clap, when you are chanting Bhagwan's name, what happens to your pap? All the pap go away. All your pap goes away just by clapping your hands. तो एक व्यक्ति मुझे पूछा, So one person asked me, Maharaj, पाप कहाँ चला जाता है? where do the pap go away? So he asked me a question, हम hey, जो he said ताली pap go बजाने के away. प्रभु के नाम जप किया, So when we हरे clapped कृष्ण, our राधे hands कृष्ण करके, and we chanted Bhagwan's name, वो Hare पाप Krishna, कहाँ चला Hare गया? Ram, where did the कहाँ pap चला go गया? away? देखो, What happened to the जो pap? नहीं कर रहे ना, So उनके people, पास जाते हैं। so people who are not clapping, the pap इसमें goes क्या to the करना people. चाहिए? So that's सभी why you प्रभु should के all नाम, clap. हाथ ताली बजा, देखो, So you should सारे clap. पाप तुम्हारे पास से सब चला जाएगा। So all your pap will go away. बोलो राधे 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 जय जय श्री राधे 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 जय जय श्री राधे. बोलो राधे 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 जय जय श्री राधे 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 जय जय श्री राधे. बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण
Rama, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. देखो आप लोग के निकट में एक सच बताता हूँ, ये प्रभु के नाम very truth, something truth. You know, when you clap, when you are chanting Bhagwan's name, there is also Vedic culture, there is vibration. इसमें हमें बहुत कुछ लाभ होता है. There is a lot of benefit for us. और सारे पाप तो नष्ट हो ही जाता है. All your paps are destroyed. क्योंकि भगवत नाम में शक्ति है. There is a shakti, there is power in the Bhagwan's name. कोई अक्षर नहीं है. It's not just the letters. It's transcendental vibration. It's transcendental sound. There is Achinta Shakti. Transcendental Shakti is there. प्रभु के नाम में इतनी शक्ति है. And there is so much Shakti in, so much power in Bhagwan's name. So when, जितने भी ग्रंथियां जो है, so all this, वो अपने आप this, ठीक हो जाता है. it's like all the faults that are in our heart, it will be all cleared. Also bimaris, you know, disease also are healed. Roj, every day, if you clap every day and clap and chant Bhagwan's name, and you will see that miracle. That is Prabhu's Naam. That is the power of Prabhu's Naam. अच्छा, ये हाथ में अपने हाथ को देखिए क्या. If you look at your hand, कुछ रेखाएं हैं ना. these lines there, You right? can see your own palm. You can see your own palm. You look at your own palm. What do you see? रेखाएं हैं. These lines. आपने देखो. These lines there. ये रेखा किसने बनाया? Who made? Who put these lines on your hand, on your सबकी palm? एक नहीं है. आपके अगल में. Everyone's lines is different. Who's looking on your, who's sitting on your right side or the left side? You look at their hands, it's different lines. Everyone's got different lines. There's sunny line, there's all different types of lines. The astrologer knows all this. One is fortune, this is Ayu, lifespan line. How many days you will stay, how many marriages you will have. It's also written on your hand whether the life your marriage will be successful. Everything is written. It's all written on you. What happens once you get married? Okay, it's written that you'll get married. So you get married, then you separate, or that's called as divorce. But it happens. I'm not wishing anyone to divorce, but it happens. There's so much arguments or quarreling going in the house. People don't look at their birth signs. They just get married. They get married. Now it's so easy just to get married. But you don't know anything. You go on the Facebook and you meet somebody. You don't go to Brahmin. You don't even look at your birth charts. Bas, just get married. And that also you don't want to get spend money with the married. They just go to the temple and exchange garlands, and they put the sindoor and that's it. They are married. Or otherwise they do court marriage, which is like a government, marriage, registration marriage. What is the fruit of that? Then there is argument between them and the marriage ends. But in our Bharat Sanskriti, when the marriage, before the marriage, you look at your birth signs. The mothers and fathers go to the Brahmins. They have to go to the Samaj, the society. But Kali Yuga, even mother and father cannot speak anything to their children.
उसके क्या होता है? So then what हम happens? इसलिए कह रहे हैं ये Why रेखाएं जो है, I'm सब है saying भक्त this, रेखा जो है। everything is written on your हैं? palm, समुद्र all the विज्ञान lines जिसको कहा are जाता है। there. ये वैदिक के रचित ग्रंथ है। That is क्या विज्ञान बताया? the Samadit, that's called Samadit. इसमें भी है सब। अपने भाग In that से कैसे Samadit लेकर क्या है? scripture is इससे written all भाग्य भी that. आप बदल सकते हैं। You can change your fortune. कैसे बदलोगे? How can you change that? How can change? How you can change that? कैसे बदलोगे कैसे? How can you बोले change नाम that? के द्वारा। By Naam, ये by राहु केतु आदि जितने this भी Rahu ग्रहों or को आपके पास Ketus, है, all these वो planets भी are बदल there. जाएगा। That will also इसलिए change. महाप्रभु का नाम संकीर्तन So करो। how that can change? By with Mahaprabhu says by है? Naam Sankirtan. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। विश्वास करके हर रोज By 5 मिनट faith, केवल with faith, हरि 5 नाम minutes, करना, by देखना clap your आपके hands and जितने do भी Harinam. उपग्रह है, Whatever दोष है, जिसके faults पास you आत्म have, पर जोग है, like कुछ some, है ऐसे। whatever you हैं? have according to सारे astrology, दोष आपके नष्ट हो all जाएंगे। these doors हैं? you have नष्ट हो जाएंगे। will go far away. हैं? कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। You don't have to do anything. 100% गारंटी मैं I am giving you 100% guarantee. ये दोष है, वो दोष है। Then somebody has dosh, like that Mangal dosh or that dosh, like astrological, that he's not घर having वाले इसको ये होता है वो this household, there is some doshas in the household. So the only conclusion, only solution is Harinam. हैं? आप जितने भी ताबीज ग्रहण कर लो, However faults you may have your planets, भोगना ही पड़ेगा। but you will have to pay, you will have क्योंकि to एक बार प्रभु के नाम ले लो, suffer. देखो, नाम करने But से if सारे you chant बाधाएं Bhagwan's अपने name, आप all the baddhas, all the जो obstacles हो there गया, are हो in गया। your जो life कर्म जो will कर go दिया, away. Okay, chalo, you may have ये done तो bad कर्म karmas, फल whatever हो जाता karma, है, प्रभु के karma is नाम done. से। Just by Prabhu's name, all the fruit of your karmas are destroyed. कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। You don't have to do anything, just Prabhu's name. इसलिए चैतन्य महाप्रभु That's why Chaitanya Mahaprabhu has given teachings to everyone that बोलो हरे chant कृष्णा Bhagwan's name. हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा देखो अभी आप अपने देखो हथेली को देखो, you can see your palm. Now see your palm. कुछ रेखाएं बदल गए कि नहीं बदल गए? See, बदल जाते हैं, सब सुख आ जाता है आपके पास। yes, everything है? you will get happiness in your life. प्रभु की नाम की मेरे नाम करने से सारे बाधाएं कट All जाएंगे। the obstacles you have in your life, कुछ करना नहीं chanting पड़ेगा, प्रभु के Bhagwan's नाम name, करने। automatically they will go है? far away. नाम संकीर्तन इसलिए कहता है कलु नाम संकीर्तन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नाम की महिमा दिखाई दे। इसलिए हम इतने समय जो अजामिल की जो कथा सुनाया, So this katha, अजामिल साक्षात देखा, katha, जमदूतों को देखा so और देखा क्या विष्णु को देखा, Yamadutas, ये दर्शन of है? Yamadutas, शंख चक्र गदा पद्मधारी Vishnudutas, सुंदर दिव्य मूर्ति very beautiful विष्णुदूतों को देखा he saw. और देख करके आश्चर्य हो गया। And when he had ये मैंने जीवन में इतने पाप किया he और अपने बेटा के केवल नाम लेकर के पुकारा realized that I've done so और much स्वयं bad भगवान विष्णु and मुझे I just रक्षा spoke दी। my son's name, क्या नाम था बेटा के नाम? and Vishnu protected नारायण me. देव, प्रभु के नाम है। आप अपने बेटा के नाम यदि डाल दिया So if you हक्कू name बाकू your डाकू son चाकू, Daku, Chaku, तो अंतिम काल में then what वही तो will बेटा के happen? नाम लेकर At the पुकारोगे, end of your time, ये डाकू 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 आएगा at the end तुम्हारे of पास, your life, when what will you chant? जैकेट से आ Daku, जाएगा, Chaku, जैकेट से चाकू Oh, चाकू sorry. चाकू आ जाएगा or Chaku, और चाकू तुम्हें and then मारेगा। the इसलिए कहते नहीं knife. That's why बेटा के क्या name. नाम रखो? No, what name should you give your हाँ? children?
Son Narayan, Krishna, Govinda, Ram, Hari, Nimai, Hari. If it's a girl, if you have a daughter, then give her a name Lalita, Vishaka. Oh, ask all these foreign devotees who are here, they got nice names. See, her name is Indumati. What is your name? Her name is Shama Priya. Shama means Srimati Radhika. Shama means Srimati Radhika, who is very dear to Srimati Radhika, is Shama Priya. Her name is Indira Devi. That is also another name for Radhika. In Srimad Bhagavatam, Janamana Vadraja Srayato Indira Shasha Atrayi Daita Dikshatam Dikshutavoka Troidita Savau Twang Vichinnate. Indira means Lakshmi Srimati Radhika. Who is serving the Braj? Srimati Radhika is the seva of the Braj. Brajeshwari. She is the supreme controller of the Braj. Rameshwari. Kameshwari. Radhika. Srimati Radhika. Indra means Radhika. Indra means Lakshmi, Srimati Radhika. Lakshmi Mai, Srimati Rai. What is your name? Madhavi. What's her name? Madhavi is also Radhaji's name. Why look? I'm saying that they are living in a Western country and look beautiful. How beautiful their names. Even their names will. All the bhaktas, all our devotees are in our Western country. They all have these code, either Krishna's name or Radha's name. And all the bhaktas also speak, they don't use Karmi Naam. And they call them by their spiritual name. I'm saying that why? If you have a girl, you should Radha, Radhe, Lalite, Vishaka. If it's a son, if you have a son, then Govinda, Vrindavan Chandra, Krishna. So because at the time of your death, you will remember your son. At least you will remember your son and speak your son's name. Or whether it's son, if you have Ashakti, you have attachment for your daughter or your son. Mother has attachment to the son and the father has attachment to the daughter. So by chanting your son's name, then your attachment also go away. At the time of the death, if you name your daughter Radha, then at the time of your death you will say Radhe, Radhe, Radhe. I will tell you one true story. I'll tell you one true story that happened in Vrindavan. Who's been to Vrindavan? Who has had darshan of Banki Bihari? Did you have darshan of Radha Raman? Did you have darshan of Nidhuvan? I will tell you the truth. Even today I am telling you the truth. Even in Seva Kunj. Even today in Seva Kunj there is a Nitya Ras. In Seva Kunj Nitya Ras is happening even today. After 10 o'clock, then in that place, even not a single monkey is there. Not even one monkey stays there after 10 o'clock. You may have seen that when you go to Sevakund, there are so many monkeys there. But after 10 o'clock, there is not in that Nidhuvan, in that place, in that Sevakunj, in that area, you will not see even one monkey. All the monkeys left and the pujaris shut the door, lock the doors. And the pujaris leave many ingredients there. And in the morning, pujaris come at 4:30 and open the doors. So Thakurji's Ras is happening there.
कुछ लोग सोचते हैं यार ये Some तो people केवल ऐसे ही think, बोलते रहते हैं। some people think, कुछ this is लोग what they are ऐसे saying. शंका करके They think, doubt से they have doubts. अंदर में And रखते हुए रात से हम देखेंगे। they have दूसरी doubts जगह and they वो think, मर oh, गया, I want to नहीं तो see this बिल्कुल लोग myself, पागल हो this जाते हैं। ras. Then what happened? That person would आज तक भी die आप or जाइए, become मैं mad. स्थानीय जो लोग ब्रजवासी जो रहते हैं, If you go there आप now, भी निकट today, में the कोई Brajvasis एक stay मकान there. भाड़ा ले लीजिए, माने किराए में ले लीजिए। You take आपको दिखाई maybe rent a room रात in का near में the Seva 10 बजे Kunj, के बाद and you will see yourself that at 10 o'clock उस स्थल पर कोई in नहीं that रहता। place nobody stays there. बंदर भी नहीं रहता, बंदर Even बाहर आ the जाता है। monkeys all come out from that place. नित्य रास होती है। Because why Nitya Ras अभी happens कथा there में सुनिए, now. एक परिवार लोग आए थे बंगाल से। So once one family came अगर from भी वहाँ Bengal. पे आए, They just got newly Eh? married, yeah. They were newly married and they came from Bengal to Vrindavan. बिल्कुल सेवा कुंज के सामने They एक मकान they किराए में ले rented a room directly opposite Seva Kunj. वृंदावन Husband दर्शन and करने wife के लिए। came. They came to अभी have अभी शादी darshan. They just recently got married. देखो 2-4 दिन के बाद After उसके 2 or पत्नी 3 days, की बुखार हो गई। क्या हो The गया? wife got a very high temperature and high fever, और उसमें ही वो शरीर छोड़ and दी। she left her body. देखो उसके पति And his husband, अपनी पत्नी के लिए इतने रोने लगे, he started बिल्कुल to पागल हो cry गए। so 3-4 much for दिन his तो कुछ खाया wife. नहीं। Like 3 days he didn't और उसके eat पत्नी के anything. नाम लेकर के पुकारने लगे, पागल But दीवानी। he उसके got पत्नी के so नाम थी his wife's name क्या? was किशोरी, Kishori. किशोरी, किशोरी, किशोरी। So his wife's name was Kishori. So he got so mad and cried and cried. He said Kishori, Kishori, Kishori. And Kishori is Radha Rani's name. छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले, पाँव में पौलिया पके छम छमा छम डोले, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले। मैंने बात पूछी लाली कहाँ तेरो नाम रे, मैंने बात पूछी लाली कहाँ तेरो नाम रे। अरे हंसते बोले मोरे राधा मेरो नाम रे, हंसते बोले मोरे राधा मेरो नाम रे। छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे। आगे से कहीं बहुत सुंदर ये कीर्तन है, ब्रज की कीर्तन है। So this is very nice Raj देखो Kirtan. So उनके पत्नी So क्या the नाम थी? wife, what क्या was the बताया? wife's name? किशोरी। Was Kishori. और उसके पति And her पागल हो husband, गई अपने her husband got पत्नी को नाम लेकर के so mad किशोरी किशोरी किशोरी, and बिल्कुल just सेवा kept on उनकी saying, चारी तरफ, bas, he was क्या just दिन में क्या रात में, day or night, he was just wandering around Seva Kunj किशोरी and किशोरी saying किशोरी Kishori, किशोरी Kishori, किशोरी Kishori. किशोरी 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 के डोलते थे। Bas, he was just, हैं? बहुत लोगों ने देखा, so many people क्या saw दिन this. में क्या रात में, Whether it was daytime or अपनी night time, he was पत्नी को just, नाम लेकर के he was किशोरी just, किशोरी he किशोरी was just किशोरी किशोरी chanting, किशोरी he was just पागल speaking हो। his wife's name, Kishori, Kishori, रात Kishori. 1 बज गया। Then 1 एक o'clock सेवा कुंज at की night, दरवाजा जो है, आप लोग गए the ना doors, वृंदावन? you know, you've सेवा seen the कुंज के Seva दरवाजे? Kunj. This is सेवा कुंज Seva की Kunj, बिल्कुल दरवाजा the है। doors, the entrance doors is और Seva वो अपने Kunj. पत्नी को नाम लेकर And के just opposite outside, he was saying Kishori, 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 and he was Kishori. crying for his wife. ठीक रात 12-1 बजे के बाद रात So बंद होगी। after 1 o'clock, the ras stopped. अपनी सखियों के साथ And Radhaji herself with her own sakhis came out. ललिता विशाखा, Lalita, जितने Vishaka, सखियां थी, all the sakhis they उन were. सखियों के साथ They, राधा जी all the बाहर आई। sakhis, Radhaji देखा came कि वो out व्यक्ति with the sakhis. किशोरी 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 So किशोरी this के person नोट खा। who was saying Kishori, Kishori, स्वयं राधा जी Kishori, कहने लगी, देखो, Radhaji ये said, मेरे नाम oh लेकर look, के look, लूट फूट खा। look at him, he's दर्शन chanting देना। my ललिता name, जी so I have कहने to give a लगी, ये तो darshan. पागल है। So Lalita said, Arey, he's अपने pagal, पत्नी he's के mad, नाम लेकर के he's ये speaking his wife's name. है, And लूट फूट खा। he's, किंतु राधा जी कहने लगे, देखो so किशोरी Radhaji के नाम said, तो मेरे ही नाम तो Radhaji किशोरी है said, ना, Kishori is my name. ब्रज में किसके नाम किशोरी है? Whose name is Braj? बोले Braj राधा name. रानी की Radha है। Rani's name is हैं? Kishori in Braj. स्वयं राधा जी उनको दर्शन दिए। So Radhaji gave darshan to him. किसी भी प्रकार से एक So बार in उनके नाम whichever लेकर कोई way you speak Bhagwan's name and you get absorbed in Bhagwan's name, राधा जी की साक्षात then दर्शन दिए। you get darshan of Prabhu.
And Radhaji herself gave darshan. And Ajamil, who spoke Narayan, and that was her son's name. Then Radhaji's name, Radhaji said, my name is Kishori. छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, पाँव में पौलिया पके चम चमा चम बोले रे, पाँव में पौलिया पके चम चमा चम बोले रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे। ओ मैंने बात पूछी लाली कहाँ तेरे नाम रे, मैंने बात पूछी लाली कहाँ तेरे नाम रे, हंस के बतावे मोते राधा मेरो नाम रे, हंस के बतावे मोते राधा मेरो नाम रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे। मैंने बात पूछी लाली कहाँ तेरे घर रे, मैंने बात पूछी लाली कहाँ तेरे घर रे, हंस के बतावे मोते बर्तन मेरो घर रे, हंस के बतावे मोते बर्तन मेरो घर रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे। ओ मैंने बात पूछी लाली कहाँ तेरे ससुराल रे, मैंने बात पूछी लाली कहाँ तेरे ससुराल रे, शर्मा के बोले मुझसे जाबड़ गाँव ससुराल रे, शर्मा के बोले मुझे गाँव मेरे ससुराल रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे। ओ मैंने बात पूछी लाली कौन तेरो भक्ता रे, मैंने बात पूछी लाली कौन तेरो भक्ता रे, शर्मा के बोले मुझसे श्याम मेरो भक्ता रे, शर्मा के बोले मुझसे श्याम मेरो भक्ता रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे। ओ पाँव में पावलिया बके चम चमा चम बोले रे, पाँव में पावलिया बके चम चमा चम बोले रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे। ओ मैंने बात पूछी लाली खाओ की गामा खान, मैंने बात पूछी लाली खाओ की गामा खान, आहा आहा बोले मेरे आगे पीछे डोले रे, आहा आहा बोले मेरे आगे पीछे डोले रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे। मैंने बात पूछी लाली खाओ के गामा खान, मैंने बात पूछी लाली खाओ के गामा खान, आहा आहा बोले मेरे आगे पीछे डोले रे, आहा आहा बोले मेरे आगे पीछे डोले रे। ओ चंद्र सती भज बाल कृष्ण सखी, चंद्रवती भज बाल कृष्ण सखी, सपनों में आके मुझे मीठी मीठी बोले रे, सपनों में आके मुझे मीठी मीठी बोले रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे। ओ पाँव में पावलिया बाके चम चमा चम बोले रे, पाँव में पावलिया बाके चम चमा चम बोले रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे। ओ पाँव में पावलिया बाके चम चमा चम बोले रे, पाँव में पावलिया बाके चम चमा चम बोले रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे। चंद्र सती भज बाल कृष्ण सखी,
सुनाया। I spoke this Braj Katha. ब्रह्मा जी, Brahma ji, Shiv ji, नारद आदि बड़े बड़े Narad, भक्त लोग all those great जो राधा के devotees, चरण कमल दर्शन कर नहीं पाते, they cannot take देखो, darshan of the lotus feet of वह Radha व्यक्ति Rani. अति सरल रूप में So this person, राधा जी की in a very दासी simple बनी। way, केवल became a राधा जी के नाम ले ले, dasi, किशोरी नाम became a रखा। dasi of Radha Rani by just chanting Kishori's name. कितना इसमें मधुर की कथाएं। So it's a वृंदावन very चलिए, sweet katha. Come to वृंदावन की Vrindavan. धूल भी आपकी शरीर Even पर in the लग जाए, Vrinda, even if you get one drop of dust on your body, अनुभव करोगे। you will realize, you will have realize, you will have realization. वृंदावन This की is not धूल just धूल any नहीं। ordinary dust. ये साक्षात This is राधा जी की चरण रेणु कहा जाता है। this is called जो Radha ब्रह्म Rani's सुख Charan नाद Renu, सुख the लक्ष्मी, dust from राम Radha के Rani's कलम feet. पुरुष सतस्य, शब्दों वसुकर्ण चूर्ण अनंत सत्यं तं राधिका चरण रेणु अनुस्मरामि। हमारे प्रबोधानंद सरस्वती पाद Our Prabhupada Saraswati, ब्रह्मा जी, शिव जी, even Brahma ji, Shiv ji, बड़े-बड़े Narad ji, दीपाल। all these great personalities, all these great bhakta, राधा जी की चरण दर्शन They- तो होता ही नहीं उनके। they don't even get the darshan of बोले the जिस lotus feet of दिशा Radha में राधा Rani. जी विराजमान होती है, In the direction where Radha Rani is दिशा के saying, धूल की प्रणाम कर रहे हैं। they are saying, they are praying to the dust of the direction in dust of the direction that Radha Rani is standing. राधिका चरण रेणु अनुस्मराम। वृंदावन ऐसे दिव्य धाम, Vrindavan is such a प्राकृत धाम, dham. इसलिए वृंदावन में जब चलिए, That's why come to वृंदावन की Vrindavan. धूल के सिर पर लगाइए। Put the dust of the Vrindavan on इनको your विशेष forehead, करके राधा जी के चरण रज। especially the dust of Radha Rani's lotus feet and gopis. उद्धव आदि बड़े बड़े Even the भक्त लोग भी Uddhav, even the इस चरण Uddhav, धूल के प्राप्ति even the करने के Uddhav लिए Bhakta, आज like तक Uddhav, भी even today to get that dust of the lotus feet, they are there is grass. राधा जी की इतने महिमा जगत में दिखाए, This is the Mahima, this is the glorification of Radha Rani. इतना ही बस करना है, बस Bas, वृंदावन में all you चलना। have to do is come to Vrindavan, come to Seva Kunj for darshan और ठाकुर जी के नाम ले लो बस, and chant Bhagwan's name. किंकरी बन जाओ। Become the maid servant and you will become the maid servant of Radha हम Rani. इसलिए अजामिल की इसलिए कहते हैं नाम की महिमा। So I spoke Ajamil's अजामिल को अपने Gatha, बेटा के नाम रखा नारायण। Gatha for the power of Bhagwan's name, and he named his son फिर Narayan, वो चले गए and then हरिद्वार में, कहाँ गए? and he had darshan of Vishnu गंगा के Dutas, तट पर बैठे, and then after गंगा that जल पान realization किया he went to Haridwar, और मंत्र जप किया। and in the bank of Ganga he chanted Bhagwan's name and mantra, and then वैकुंठ में गए, after विष्णुदूत को लेकर के गए। after his उस समय अजामिल वही विष्णुदूत after के the end of पूछा, the life he went to Vaikunt. दे उस समय आप लोग हमें क्यों नहीं ले गए? So तब Vishnu विष्णुदूत Dutis ने कहा, asked, Vishnu नाम Dutis से asked a प्रेम question उत्पन्न नहीं that when I died that time गुरु you से came, मंत्र आदि लेने के that बाद time you came, why didn't you take me straight to Vaikuntha? Then Vishnu Dutas said, no, we gave you the mantra. So by chanting, if you don't get Satguru, if you don't get the mantra from a guru, then you will not get someone relationship with Bhagwan. That's why Tulsidas is saying in Ramcharitrama, जो ब्रह्मा वृंच समा हो, ये वृंच समा हो, बिनु गुरु तरुण दिक्कत, without guru, करने जोई, without guru, जो सिर्फ ब्रह्मा के भांति even the ज्ञानी भी बन जाए, Shivji, even the Shivji and Brahmas, they can jnani, but if you don't have guru, you cannot attain Bhagwan. So without guru, nobody can attain Bhagwan. Even the Sankas, even the great personalities like Brahma and Shivji, even they become a gyan by studying the scriptures. But if you don't have guru, then you will not be able to cross this material world. So that's why in the Krsna Bhagavad Gita से दीक्षा मंत्र so लिया, even Krishna स्वयं himself रामचंद्र भी Harinam वशिष्ठ from ऋषि Bhagavad से मंत्र लिया। Maharaj and Ramchandra, he also told to हमारे चैतन्य महाप्रभु Chandra कृष्ण, from Vishish. उन्होंने भी ईश्वर परिपाद से दीक्षा मंत्र दी।
इसलिए दीक्षा मंत्र आदि लेकर के even Mahaprabhu took Harinam Diksha from शुद्ध Ishwarpuri. सदाचार पालन करें, So ललाट follow पर the full, तिलक लगाएं। follow the rules गले and में regulation. Put कंठी tilak on धारण your करें। forehead and your एकादशी neck. आदि पालन करें। Have a tulsi mala around your बहुत neck लोग and एकादशी follow पालन नहीं Ekadasi. करते। Here not many किंतु people शास्त्र follow. बताते हैं, Many एकादशी people पालन don't करना follow चाहिए। Ekadasi. The Shastra say एकादशी that के you दिन follow. You किसी should प्रकार follow Ekadasi. अन्न भोजन करना नहीं चाहिए। On Ekadasi you should not चावल, consume, not eat or consume बजरा, any grain ये भोजन करना like wheat, bajra, शरीर millet. यदि ठीक हो, If your body is good, आप निर्जला व्रत कर then you सकते can do Nirjala Vrat without drinking drop of water। without drinking drop of water. और शरीर यदि ठीक नहीं है, आप If your फलाहार कर body is सकते हैं। not good, then you can take fruits. शुद्ध सदाचार पालन आदि करें। So you follow the भगवत rules नाम and जप regulations and chant Bhagwan's है। name. इस नाम की महिमा This जगत is- में दिखाए। This is the power of एक बार Bhagwan's प्रभु के name. नाम जप करें बस। बस। मृत्यु के समय अंतिम एक काल बार में you प्रभु के chant Bhagwan's नाम name ध्यान में once आ जाए at the बस। time of आप death. भगवत धाम में चले जाइए। You chant Bhagwan's वृंदावन name, then you बिहारी will go back to लाल की जय। Bhagavad Dham, जय back to Godhead. जय श्री राधे। है, अधिक समय में लेना नहीं चाहता हूँ। 8 बज गए ना, समय हो गया। आप लोग एक बार प्रभु के नाम ले लीजिए बस। है, बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। बोलो राधे 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 जय 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 श्री राधे, राधे 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 जय 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 श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, गोविंद हे नंद किशोर कृष्ण, हाथी यशोदा तनय प्रसीद, श्री वल्लभी जीवन राधिकेश, श्री कृष्ण गोपाल हरे मुकुंद, गोविंद हे नंद किशोर कृष्ण, हाथी यशोदा तनय प्रसीद, श्री वल्लभी जीवन राधिकेश, श्री कृष्ण गोपाल हरे मुकुंद, गोविंद हे नंद किशोर कृष्ण, हाथी यशोदा तनय प्रसीद, श्री वल्लभी जीवन राधिकेश, श्री कृष्ण गोपाल हरे मुकुंद, गोविंद हे नंद किशोर कृष्ण, हाथी यशोदा तनय प्रसीद, श्री वल्लभी जीवन राधिकेश, श्री कृष्ण गोपाल हरे मुकुंद, गोविंद हे नंद किशोर कृष्ण, हाथी यशोदा तनय प्रसीद, श्री वल्लभी जीवन राधिकेश, श्री कृष्ण गोपाल हरे मुकुंद, गोविंद हे नंद किशोर कृष्ण, हाथी यशोदा तनय प्रसीद, श्री वल्लभी जीवन राधिकेश, श्री कृष्ण गोपाल हरे मुकुंद, गोविंद हे नंद किशोर कृष्ण, हाथी यशोदा तनय प्रसीद, श्री वल्लभी जीवन राधिकेश, श्री कृष्ण गोपाल हरे मुकुंद, गोविंद हे नंद किशोर कृष्ण, हाथी यशोदा तनय प्रसीद, श्री वल्लभी जीवन राधिकेश, श्री कृष्ण गोपाल हरे मुकुंद, गोविंद हे नंद किशोर कृष्ण, हाथी यशोदा तनय प्रसीद, श्री वल्लभी जीवन राधिकेश, श्री कृष्ण गोपाल हरे मुकुंद, गोविंद हे नंद किशोर कृष्ण, हाथी यशोदा तनय प्रसीद, श्री वल्लभी जीवन राधिकेश। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे
Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare.
भक्ति महाराज की जय, श्री गुरुदेव की जय, श्री गुरु परंपरा की जय, गिरिराज महाराज की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, श्री कृष्ण चंद्र की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। જરૂર તમે આજે લાભ લેજો, ગુરુદેવનું શરણ લેવા. નામ ના લીધું હોય તો તમારા આધ્યાત્મિક નામ ગુરુદેવ આપશે. બહુ સુંદર રાધા કૃષ્ણનું નામ, પુરુષ हो तो कृष्णનું नाम कोस ने बहनों राधा जी के नाम, एक राधा जी का नाम ले लो, आपका जीवन सफल हो जाएंगे. जरूर गुरुदेव को